Hello, brainies. Welcome to Alpha Beta S. Our opponents today are Sipun and Sohit. 6-7. 6-7 hit. 6-7. In round 1, they will earn as many points as they can. In round 2, they have a chance to bet those points and maybe double them. Yeah. Identify this animal. Shera. Bruh. Simba. Okay, so Story. Lion King. Yes. Shamshera. Nope. शेर खान. Nope. Guys, ये मुझे नहीं उम्मीद थी. Scar. या. हिंदी में शेरा ही तो है. नहीं है? I don't know Hindi, but I didn't ask Hindi. Oh yes. यार ये है उसका मुफासा का दुश्मन. मुफासा का भाई. जो हाँ लड़ाई होती है जिनकी. Originally, इसका नाम ताका था. Taka. Which in Swahili means waste or trash. Scar was a adopted name. अच्छा. Because buffalo से कोई लड़ते लड़ते उसकी आंखों के ऊपर, eyebrow के ऊपर एक scar आया. ये भी हैरी अपना है. Originally tracing back to the Greek word sarkase, what am I doing in Nifun cracks a bad pun and I say, wow, that was so good. Sarcasm. Yeah. It is sarcasm. मेरे को क्यों तोड़ा इस क्वेश्चन में? It is sarcasm. You like my pun secretly. Secretly. So sarcasm की etymology बहुत crazy है, but हाँ, it used to mean to bite off flesh or tear off flesh. Oh. In Greek. Under a different name, what word appeared in the US version of this popular fantasy book because the publisher felt Mohit? Sorcerer. I was first. You seen the edit, okay? You see it. biased. Audience question: name of the Irish half-blood in Harry Potter. Oh. Also a Gryffindor, also Harry's friend. Located on a hilltop. Identify this UNESCO World Heritage Site. सांची स्तूपा. Yes, हमारे मध्य this is प्रदेश में. Sanchi Yeah. Stupa on the 200 rupee note. हमारे मध्य प्रदेश तुम्हारा छत्तीसगढ़. अरे मतलब. ये ट्रिविया मुझे इन्हीं से मिली थी, लेकिन Oh. बच्चे बने बाप. अरे हमारा बच्चा हो गया निप्पू. अरे इतना बड़ा दाढ़ी हुआ वाला. भाई, दाढ़ी वाला आया जैसे. कचरा नहीं, भाई कचरा बोल रहे मुझे. What is this place? Shell. You're right. You are absolutely Now we're right. at the same point. Crazy है भाई. Mate. They used to sell seashells. They started by selling seashells, Wow. but it was crazy. Yum. Next question. Here we go. Nice and cold, there exists a remote, icy group of islands in the Arctic Ocean where polar bears outnumber humans. Which region are we talking about? Okay. थोड़ा सा tricky है. हाँ. No? कुछ तो दिखा. Svalbard. Svalbard. Oh. 6 months, no sun, 6 months, full sun. So Svalbard is like the group of islands, but इसका सबसे northern most capital है Longyearbyen. जहाँ पे which is like there's about 2,000 population of 2,000, which is the most inhabited city in all of Svalbard. यही से सब कुछ होता है. You are required to carry a firearm wherever you go. Out of Longyearbyen, yes, because of polar bears. खतरे, Might yes. hunt. Nice. Longyearbyen is just this. Wow. Such a beautiful settlement. मस्त है. Internet आता है इधर? इंटरनेट आता है बिकॉज Blinkit? जितने मैंने व्लॉग्स देखे इतना ब्लिंक इंडिया के बाहर कहीं नहीं आता. मेरी जीके मत टेस्ट करो. आई एम जस्ट द क्विज मास्टर गाइस. That's Mohit. हियर वी गो. पंजेंट इन आफ्टरलाइफ. व्हाट एनिमल इज दिस? अरे. निपू. I was saying squid, but I know there's not. No. I अरे know, एक I know. सेकंड. अरे इसको Oh. क्या कहते हैं? और यार ये वही है ना इसके एक तीर ऐसे जो बंदा मर गया था उसको भाई. Swordfish? No, No, ना. no. अरे this is wait second. Skunk. नो स्कंक Skunk is not an aquatic animal. हाँ Oh. तुझे नहीं पता ना स्कंक कैसा दिखता है. Oh no. तुझे नहीं पता है ना स्कंक कैसा उस दिन हमने दिखता बात है. भी करी थी skunk के बारे में लास्ट टाइम जब मैं आया था. निप्पू को नहीं पता स्कंक कैसा वो दिखता है. बास मारता है. हाँ भाई इतना पता है तेरे को. तेरे लिए हाई ना मोमेंट है ना. यू हैव नेवर सीन स्कंक रियली. कितना तो बोल गए भाई. नहीं भाई skunk ही लग रहा था मुझे. This is स्मेल से. स्टिंगरे. Oh, as Stingray. basic as यही तो मैं stingray. कह रहा हूँ. कांटे को स्वॉर्ड के अलावा क्या बोलते हैं? Come on, stingray. Stingray. ऑफ कोर्स यार उसने वो ऑस्ट्रेलियन कौन बंदा है बहुत. आएगा. दिस इज द ऑडियंस क्वेश्चन. पहले हम फैक्ट्स जानेंगे. Yeah. पहले हम ऑडियंस क्वेश्चन कर देते हैं. हाँ. So he was a world renowned Australian zookeeper and conversationalist, Yeah. also known as the crocodile hunter. तेरे को नहीं पता? Conversation is नहीं भाई conversation is नहीं पता? conversation is नहीं भाई conversation is
Conservationist, sorry. Conservationist. बातें करता Conservationist. है बहुत बातें करता क्रोकोडाइल। करता था? हाँ। नहीं, you don't know? आप बताओ। अब इसका बेटा भी करता है बहुत Yes. अच्छा। भाई इसका And- बेटा कुछ जानवरों के साथ बातें करता है, खेलता है। Also tell me कॉन्वर्सेशनिस्ट ही है जानने वाला why are we talking about? तो मोमो ने मोस्टली बोल दिया है, वो कट जाएगा अलग बात है, but हाँ. because he was killed by a stingray. Yeah, he he was while doing a documentary with his wife, he was stung by a वो stingray. स्टिंगरे घुस गई उसके छाती And में। in Queensland, Australia, I think. Yeah. Most of Michelangelo's life was spent in painting in the ceiling of this place. Sistine Chapel. You are perfectly right. And now, ladies and gentlemen, friends and countrymen, you will understand why I was crying the hell out. Because I have mentioned this here. Context. Great Adam. ग्रेट एडम। गलत हूँ मैं, मुझे पता है. You will soon realize that I should really go back to where I came from if I don't know this answer. Yes, this is peak brainiest content. No, Yeah. not just You because of should that. know if you're brainy. You should know. You will please. realize it soon enough. In our video. Can I go and dump myself somewhere? मैं पता है आज मैं इतना frustration नहीं दिखा पा रहा था. Context पता है उनको नहीं वो पता. एडिट में दिख जाएगा कॉन्टेक्स्ट। अच्छा अच्छा. मैं पिछले 2 हफ्ते से इसी पे काम कर रहा हूँ, हर दिन देख रहा हूँ इसको 4-4 10-10 बार. What is this? What is this, Nepo? What is that? 25 in What is- Roman numbers. 25, the last date to get your September issue. कैसा दिखेगा September issue? Oh my वाह, beauty! Oh This is the God! cover page. This is the only. cover page. Yes. And then these are the अंदर के pages. These are all the editorial duties जो Thank you, निप्पू कर रहा है। दोस्तों अल्फा बीटा एस 4 September. वाह. लास्ट डेट इज दिस, है ना? हमें जो ऑर्डर आएगा वी विल गेट ओनली दोज मैनी क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर्ड एंड शिप। बाद में प्लीज मत बोलना कि हमें दोबारा चाहिए। तो अगर यू हैड बीन वेटिंग फॉर कि सितंबर इशू चाहिए तो दिस इज द फाइनल कॉल। Final call, and there is also some masti and cute collectible in the September. कुछ आ रहा है, Stamp तो है ही. स्टैम्प है तो सबके साथ है. हाँ, There's एक something. न्यूज़पेपर स्टैम्प तो आएगा ही आएगा। देयर समथिंग मोर दैट वी आर ट्राइंग पार्थ टू। ने एक मस्ती तो करी है. पारी, हाउ हैप्पी आर यू विद सितंबर्स इशू? एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज लास्ट टाइम से हमने बहुत ज़्यादा बेटर करा। Hmm. तो हम हर एडिशन में लोगों का जो भी फीडबैक आता है उसको ध्यान में रखते हैं एंड उसके हिसाब से और डिज़ाइन को बेटर करते हैं एंड उनके लिए Nice. ऑप्टिमाइज करते हैं सो दैट वी शो दैट वी केयर अबाउट देम। या Go to picnicpost.com. यस, सारी डिटेल्स है वहाँ. You want to add more copies, you can do that. Like there are everything. Yes. This boy has created a very nice website. यस, picnicpost.com पे आप जाएं, आप पूरा देखें. मुझे There कुछ are- बोलने की जरूरत ही नहीं है. और. yes. There are almost 1,500 people getting this issue this month. You are one of the very few people who like puzzling and who like Thank playing you so games. much. Thank you. Bye bye. Mohan would have looked very different if another Khan had accepted this role when first offered to him by Ashutosh Gowarikar. Which movie are we talking about? Swadesh Mohan Bhargav. बस. You're right. Swadesh by Mohan Bhargav. Bye Mohan Bhargav. By Ashutosh Gowarikar. मैंने इतना जल्दी पढ़ा है कि मुझे लगा तू पूछ रहा है लगान की बात Yes. कर रहा है और किसी और को ऑफर की गई थी तो मैं कुछ सलमान या शाहरुख ऐसे सोच रही थी कुछ अलग ही. Look at this. Do you remember who the guy on the right is? Ashutosh Gowarikar. Yes. Himself. Oh. So स्वदेश जब बनी नहीं थी, जब लगान शुरू हो रही थी उससे पहले भी he already had the story for it. He himself played Mohan in an episode of an anthology called Vapsi. Anthology का नाम Love Stories था, episode का नाम Vapsi था. Same T-shirt and the Wow. lady who played Kaveri Amma has reprised her role in Swadesh. Oh, wow. Same actress. Bye, wow. और similar story थी like somebody who comes yes, back. It's a 39-40 minute episode. And same story. Last question of the round. Are you ready? Yes. You don't need to be ready because there's an intermission. We'll play a very, very quick game. It's a game of compounds. Okay. What is a compound? A single word or phrase formed by joining 2 or more independent root words Okay. to create a brand new meaning. Yes, Okay. let's go. For example, baby plus sit, babysit, rain plus coat, raincoat, fire plus fly, firefly, day plus dream, daydream. Okay. Now, every time you get any compound word that starts with S, you get 5 points. But any time you get a word where both the separate individual words start by S, you get 10 points. Oh. और we have to write. You have 30 seconds. Oh no. हाँ, चल Right, रहा है. Okay, start. okay, okay. Start. मैंने बोल ही दिया था. Oh. Why am I blank? मैं भी blank हूँ यार.
अरे अरे यार पूरा क्रॉस वायर्ड बताया भाई What are बनाया you doing, Nipun? S. We are in S. ओ सिर्फ ऐसे बनाने हैं सारे We are in S. आप ऐसे बना रहे हो? भाई टाइम भी खत्म ये हो तूने गया एग्जाम्पल में तो एस तो लिखा नहीं है ना Because I can't give an S example. ओ ये तो बोला ही नहीं तूने आपने S से बनाया क्या? हाँ Oh, shit. I'll give you 30 seconds more. हाँ। आपका हो गया है। मेरा हो गया है हाँ, आपको तो पता था ना S से बनाना है। उसको अच्छा। उसने कुछ भी नहीं लिखा है इससे। अच्छा अच्छा Oh. ठीक वो बुक मार्क लिख ओ दिया। अच्छा ओके, योर टाइम स्टार्टेड। है ना, टाइम प्रेशर होता है ना, आप समझ आए ना। अच्छा, ये तो पहले भी एक साथ खेले हुए हैं 30 सेकंड कौन देता है यार, बिकॉज मुझे लगा पहला वर्ड बताओगे सेकंड हमें बताना है ओ नहीं हाँ सेम एक मिनट तो हो गया इट्स ओवर या ओके राइट। पहले मोमो मैंने दो ही लिखे हैं सनराइज सनसेट ओके, सो यू हैव सनसेट सनराइज, सो 15 15 points. points I don't even know half of my answers valid or not. Okay. I have written shipwreck, Shipwreck is a word, I'll give it to you. spaceship, Spaceship is a word, I'll give it to you. spacesuit, Spacesuit is a word. soap stick. I don't I will have to I don't VAR on know. that. If soup Praise, stick- there are two different know. words Two different different words, but I don't know if it's a single word as well. I So- don't think so. But you have gained more points than Mohit. You've got 30 points. Spacesuit, spaceship तो सही है. 20 Shipwreck points. भी Shipwreck is also a word, yes. So you So I have have got 10, 10 and 5. oh 25. shipwrecks, 25 points. Okay. The fact of finding something valuable and interesting by accident or something pleasant happening by chance. Serendipity? Yes. Oh. It is क्या बोले आना था तू? मैं हैपेंस्टेंस बोलना था पर वो तो serendipity. Okay. Do you know what this is? किसी शिप का वो होगा No. So, serendipity. So, the word serendipity was coined in 1754 by British author Horace Walpole. ओके But how did he come up with the word? It all starts with a story. ओके It's a fairy tale about three sons who were always making discoveries by accidents of things they were never in quest of. हाँ The three princes of Serendip. Oh ho yes Now, What is Serendip? is Serendip? I think you both know this. Yes, yes, yes. Oh, it is Serendip very is the historic Persian and Arabic name for Sri Lanka. yes श्रीलंका अपना Derived from the Sanskrit Simhaldvipa, meaning dwelling place of Lions Island. yes Blown हो गया था भाई मैं. सेरन द्वीप शेर द्वीप लायन आइलैंड The most interesting part is the original story traces back to Amir Khusrau's Hasht Bishit, which was written in 1302. वाओ ओके वाओ And it was discovered by Horace Walpole, who was an English historian and writer in 1754. That means that him stumbling upon the word serendipity or just making the word serendipity was serendipity in itself. oh yeah He himself said, Ah. I definitely think that it's a classic instance of serendipity. The transmission of this folk tale, as far as I can tell from my research, it came into English from French, and it came into French from Italian, and it came into Italian from Persian. So the Italian version, which was a Venetian version, क्योंकि Venice का उसका version था, was called Peregrinaggio di Tre Giovanni Figliuoli del Re Serendipo. Yeah. ये मैंने कुछ भी बोल दिया. The pilgrimage travels adventures of the three young sons of the king of Serendipo. Remember the name from somewhere? yeah King of. oh The original manuscript. Wow. Now, what is the difference between luck and serendipity? So, luck is the subjective experience of chance events working out either in your favor, which is good luck, Or in bad. or against you, which is bad luck. Serendipity is the phenomenon of experiencing a fortunate chance event and also having the wit to extract value from it. And serendipity cannot ever be a bad experience. It's always a positive Oh, experience. wow. Why are we suddenly talking about the difference between serendipity and luck? And why was this the last question, but there was a game before this? Let's have a look at both of our answers for the compound game. Shipwreck, spaceship, spacesuit, soup stick. What do you write? sunset and sunrise Sunset and sunrise, okay. You missed a word. Not just on the board, but throughout the game. I don't know, man. S I don't know what he's doing. I don't know. What word? You I tell me. don't know. I don't know. She is playing games I with don't us. know. Somebody is playing games with us. But while I'm still like very struggling in my mind to understand where this is going, but I'm enjoying the ride. Yes, I say I don't know. I'm absolutely enjoying the मैं तो ride. ताली बजाने के लिए बैठी हूँ, पता नहीं क्यों, but नहीं. मैं तो बहुत ready हूँ. You both know the word. The word means everything to you. This exact term was first recorded in a letter written by the English poet Samuel Taylor Coleridge
to a friend, very advised, to be happy in married life, you must have a Happy wife. That's right, but that doesn't sound like. S. Soulmate. Yes. Let's have a look at the first word of each question again. ऐसी होगा भाई. So, S-O-U-L, mate. That's the first word of each question. Nipun Momo. Oh. 10 questions. A Nice. soulmate hidden in the. Oh my God. Whoa, pungent. Nipun is pungent. I'm also. You could have said I'm nice. Yeah, Nice. nice If and you know, pungent. you know, nice and pungent. Both are like nasty. So if you had written the word on the board, everything else would have crumbled into pieces. We would have meant nothing because there can only be one soulmate on this table. I'm not talking about the soulmate in the questions. टेबल के ऊपर soulmate है हमारा. It's already there टेबल under में the राखी table. सावंत थी. Look under your tables. Oh my god. There's something. Show it to the camera. There's something. Oh my god. So there's only one soulmate, and if either of you had written soulmate in the compound game, this would have all gone to pieces. It wouldn't have made sense. So why we're talking about the difference between luck and serendipity is because it's all serendipity to you, but it turned out to be good luck for me. Wow. Something trippy. भाई something trippy. रुको. भाई. ये क्या? वाह. कहाँ पोएट्री भाई गई? पोइट्री. भाई देखा कहते थे ना ऑथर. ऑथर भाई ऑथर. भाई किताब आएगी ऐसे ही आएगी. We'll talk about another book which is already out, like Harry Potter, but which can maybe change its name when it releases in the US. What the what? Oh, Harry Yay! Potter. Give it a direct segue. Segue. Actually, it came from serendipity because we met our publishers out of pure serendipity at A pub pub quiz. quiz. So it actually मतलब उन्हीं ने हमें serendipity का origin बताया था. The day we met और TA. उसी दिन हम मैसेज में बात कर रहे थे. हम कह रहे थे this is Yes, pure pure serendipity. serendipity. तब उन्होंने बताया do you know where the word comes from? So that is how we both know. We will also put that text का वो screenshot. Yeah. The what was born out of pure serendipity. भाई ये प्योर सर ये क्लोज लूप हो गया जो आपने बुक का भी शुरू कर दिया और ऐसे सेरेंडिपिटी एवरीथिंग. Nice. कैमरे पे थे तो कहीं और दे नहीं पाया मैं. अभी नहीं देंगे. वो BTS उसमें आएगा. लास्ट में देखो. दोस्तों लास्ट के 10 सेकंड जरूर देखना. Full of stories, full of puzzles, full of games. That's it. हाँ. Literally full of story. Go and buy it at whatthewhat.co. You also get free bookmark. Something एक free goodie also. छोटू सा. हाँ वो आपको वहीं मिलेगा. And all of them are signed copies. You'll see 6 categories to bet your points on. Each category has a question behind it. All but one answer starts with the letter S. So there is one joker. उन 6 categories में से एक में एक joker छुपा हुआ है. जिसका answer does not start with S. Okay. Yes. If you get the joker right, you can double your points. Secretly cheap. Oh, Shivan. So the scenic beauty, Momo. soulful fall, seriously engaged, Nippu. and scary capital. Oh my god. For the chindi person that I am, Oh, I'm chindi, gonna chindi. go and start with secretly cheap. Ooh. Oh. This word originated in the 18th century as a mockery of the French finance minister Etienne de Dash, where he imposed severe economic demands and heavy taxes, particularly on the wealthy. Because his economic cuts were so unpopular, Parisians began mockingly using the phrase "a la Dash" to describe anything done cheaply, quickly, or simply. Before photography, having a painted portrait was incredibly expensive. Cutting out profile portraits from black cardstock was the cheapest and fastest way to record a person's appearance. Because these paper cutouts were affordable and bare, the wealthy mockingly started calling them X. What are we talking about? As people watching APH know, कि words के question मुझे बनाने बहुत पसंद है. मुझे क्रैक कुछ नहीं होता. आज मैं उनको रॉन्ग प्रूफ करूंगी बहुत क्योंकि अभी difficult मुझे था. कुछ भी नहीं हो रहा. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था बीटा. कोई भी क्वेश्चन बिकॉज आई वाज लाइक इनको तो पता ही होगा. इनको तो पता ही होगा. अरे तूने हम लोग को बहुत चढ़ा के रखा है. हम लोग को कुछ नहीं आता. The word. आपको Nipun, you think. Yes. So firstly,
I'm thinking from S only. This looks too detailed. हाँ लाइक मुझे तो आला से सिर्फ आला काटे आ रहा है और कुछ Doesn't आला have to रे start with आला। ठीक है, तो हमें ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हम फाइनेंस में हो सकते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा कि शिवांग बहुत फाइनेंस डायरेक्शन में जाएगा, because he's worked in a bank but he's not that kind. When he imposed severe economic particularly on He has I've worked in seen a you bank, in but he P. doesn't even have an Questions account. बना रहा हूँ, बेइज्जती हो रही है, ठीक मैंने है? तुझे पी के मल्टीवर्स में देखा है, because his economic Paracetamol, Viagra. no पोर्टफोलियो वाला क्लू, Portfolio, फाइनेंस वाला मैंने हाँ। इसके लिए रखा था. So I was like, okay, because his economic cuts were so unpopular. Economic minister का सरनेम है, okay. पहली बार मुझे मजा आ रही है, मैं बीच में बैठा हूँ, कोई निपुण को मैं सोचते हुए ऐसे पहली बार. So okay, so my first thought has already been paper cuts वगैरह से to silhouette. तो अब मैं अपना भी याद कर रही हूँ कि मैंने कभी गूगल करा है क्या, मुझे नहीं याद आ रहा, बट जनरली स्पीकिंग silhouettes are like easy to draw. It's always like a lazy method. पर मैं उसको cheap से एसोसिएट नहीं हुआ, पर आगे चलते हैं. अभी हम सिलुएट ही सोचते हैं. बिफोर फोटोग्राफी हैविंग अ पेंटेड पोर्ट्रेट वाज incredibly expensive. Cutting out people from black card, black card stock बोल दिया ना, हाँ सिलुएट. अब मैं चली गई हूँ आगे. It also sounds like Little. French. नहीं French. Oh. So हाँ अब ये black ऐसे कुछ क्लू ढूंढ रही थी मैं जिससे मुझे बस कंफर्मेशन मिले. Okay. Affordable and bare. Yeah, see, you've written bare. हाँ. Finalizing your answer. देखो मैं लाइफ में वो क्या बहुत होता है? ब्रीफली कुछ महीनों तक आर्टिस्ट रही हूँ, तो आई थिंक आई कैन. वो क्या होता है इसमें ऐसे हील होती है लंबी सी. Stiletto. That was a dagger, so that is not this for sure. मोमो ने क्या बोला था? हमको अला काट, यहाँ पे अला लिखा तो मैं काटे कर रहा था कुछ काट. चीप. वो भी Like फ्रेंच, buffet महंगा वो भी होता है. फ्रेंच वर्ड है. उससे क्या वर्ड आया पता है? अला कार्ट से. अला कार्ट इज लाइक अ By the card. मेन्यू, बाय द कार्ड. हाँ. जो मेन्यू में तुम वही बोलना है. हाँ. Fortunately, Nipun, if you had listened to Momo, oh no, you would have been wrong because you're right. Silhouette. Wow. Crazy crack. 25. Wow. लगा 25. Wow. Silhouette. Wow. Crazy crack. Very Crazy good. question. Finance. नहीं, he was a what minister? Finance minister. Yes. Wow, Mr. Silhouette. Yes. That is Atyan this crazy. silhouette. जो देखते मुझे लग रहा है ना कि ये तो मैं कर सकता हूँ. Is which one? You know, I'm thinking which is your. मतलब एक अपील कर रहा है मेरे बहुत दूर से, मतलब बहुत दूर से, बहुत जोर से. पास में रखा है, दूर The तो वैसे ही one. नहीं हो सकता. हाँ. Yeah, So it's looking weird. Like So something. ड मानते हो अपने आप को? ड. So hit तो बोल चुका है तू उसको. So सीपुन. चलना चुनना. Okay, Soda. soda. You're taking Achha, soda. soda. Okay. हाँ. So soda for. I would guess. Oh, you're guessing. Okay. ऐसे bragging. Good. For however many points. मैं भी कर दूं फिर ब्रैगिंग गैस. Yeah, sure. Wow, भाई मेरी तो इतनी गंदी बेइज्जती हो जाएगी ना. नहीं ना, अरे तो यार. Here is your question. मुझे लगा था सोडा का ऊपर आएगा. This हाँ, ये तो iconic है. soda was launched in the US in 1961 for the sole purpose of destroying the market monopoly of a clear lithium-infused rival. Its formula was imported from West Germany, where it was originally developed in 1959 under the name Fanta Clare Zitrone. It was finally branded by its known name Dash after an elf-like advertising mascot from the 1940s known as Dash Boy. The word itself derives from Latin, referring to a playful, energetic fairy or spirit. Which drink are we talking about? I know this. I think. How do I know this? Yeah. मैं पॉडकास्ट सुन रहा था. दो episodes से इसका मेरी pod- सौतन. उस पॉडकास्ट में the entire history of Coca-Cola है. And I was like getting mind blown every single time. I think you तो- mentioned the podcast in the previous हाँ. multiverse, हाँ. not in the main video. हाँ. हाँ, कोई बात नहीं, हाँ. Every answer is coming from Yeah. podcast. हाँ. ठीक है. तो मुझे पॉडकास्ट बहुत पसंद है, तो मैं एक 4.5 घंटे का 5 घंटे का पॉडकास्ट सुना था अबाउट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ कोका-कोला. तो उसमें एक चैप्टर अबाउट फैंटा था. फैंटा का अब वॉर हो रही है, ठीक है, तो कोका-कोला वाज नॉट गेटिंग इंपोर्टेड टू जर्मनी. लेकिन जर्मन लोगों को मन करता था कोका-कोला तो पीनी ही है हमें. पर अब जब कोका-कोला नहीं आ रही तो क्या किया उन्होंने, खुद का ही कोका-कोला फॉर्मूला बना के देखा कि चलते हैं काम. और वो जो उनका फ्लेवर था, इट वाज अ नॉक ऑफ कोका-कोला, वाज फैंटा. उनसे एग्जैक्टली नहीं बना, जो भी बना उन्होंने काम चला लिया, जिससे काम चला लेंगे, इट्स गुड इनफ.
बाद में सब कुछ ठीक हुआ, देन कोको कोला एक्वायर्ड फेंटा कंपनी और फेंटा बिकेम पार्ट ऑफ द कोको कोला। फेंटा का ही एक फ्लेवर आता था, क्लियर लाइम, क्लियर लेमन, शायद वो ये क्लैरे जिट्रोन, Oh, Zitron is citrus. Yeah. क्लियर सिट्रस। फेंटा का एक फ्लेवर आता था, क्लियर लेमन, जिसको वो लेकर आए यूएस में एंड दे रीब्रांडेड टू स्प्राइट, व्हिच वी नो एज स्प्राइट टुडे। Wow. So my answer Answer would is be Sprite. Sprite. पहले क्या बता रही है? आंसर इज 7 अप। इट्स स्प्राइट। वेरी गुड, अरे क्रेजी। ये स्टोरी सुन के मुझे खुद पूरी सुनाई थी उस दिन। He was like really excited. अभी तो मैं इसके पीछे भी एक कहानी है। ये क्वेश्चन बना बिकॉज ऑफ अ सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा लास्ट में। Okay. Yeah. So this was Sprite Boy. तूने Sprite, हाँ यार, it was Sprite Boy, हाँ, which is Nice. crazy. It was very big news to Wow. me. Wow. Yeah, I Good. did not know Sprite Boy. मैं तो लिखा सोडा लिख के सार्डो आएगा कुछ। Oh, अरे नहीं। But 40 points. 40 points. पहले मैं सोडा Okay. ही लगा रहा था, सोडा में क्या जाएगा? सोडा में तो कुछ नहीं हो सकता, सोडा सोडा होता है। I love the old logo. Yeah, हाँ. 1961, The first 64. logo is so अब बहुत ही nice. बेसिक कर दिया ना। पता है आजकल सारे सारे लोगो brands ही हैव बिकम मिनिमल फ्लैट ऐसे। Yes. अब वापस जाओ। भाई लाइफ में जिंदगी नहीं है उनकी, कोई सारे गाने हैं इंस्टाग्राम डीपी पे क्या अच्छा दिखेगा ये दिस द टेक्स्ट। ए यार क्यों मेरी दुनिया से कलर उड़ा रहे हो आप? ओके लेना चाहिए। यू नो आई थिंक मैं थोड़ी सोशल मीडिया पे रहती हूँ एंड एंगेज साउंड्स लाइक समथिंग सोशल मीडिया एंड आई थिंक Oh. माय एंड योर सोशल मीडिया मैचेस। Oh. आई गो फॉर seriously engaged. Oh, okay. Officially declared a billionaire by Bloomberg, X is a global pop icon born around the turn of the 1990s with a hyper-loyal international fan base. X achieved their first ever Billboard Hot 100 #1 single with a raw, emotional ballad reflecting on a toxic, highly publicized relationship with a fellow music superstar. X's Instagram post announcing their engagement holds the record for being the second most liked engagement post for any woman in Instagram history. Who is X? As I said, I think our worlds are the same. I don't think Mohit could have done this because our worlds because he's a girly. He's like girl gang. Clacking. So okay. सबसे पहली बात तो मैं डिमोटिवेट हो गई क्योंकि मेरा कोई ये नॉलेज बहुत खास है नहीं, है ना? ऐसे विदेशी सिंगर्स स्टार्ट एंड एंड एट टेलर स्विफ्ट, that kind of. Oh, this is not Taylor Swift. So Taylor Swift can't be second most liked, is what I feel. It can't be Taylor Swift, but that is not the clue that helped me. Well, that clue supported it. The main clue here is toxic, highly publicized relationship with a fellow music superstar. Somebody who has dated a music star, superstar, is Selena dating Justin Bieber. मेरा नॉलेज इतना ही है, खत्म हो जाता है। 1990s में हुई होगी पैदा, है ना? कितनी उम्र हो गई 1990s में? 30 साल की हो गई। हाँ, उतनी साल की है। या आई थिंक दिस इज सेलिना गोमेज। Is that your final answer? या आई डोंट नो मैन, ये कहीं डुआ लिपा विपा तो नहीं होगी? नहीं नहीं Okay. नहीं। Highly publicized relationship with a fellow music superstar. You said Selena Gomez, Justin Bieber, Taylor Swift, Harry Styles. नहीं, but Harry Styles was not known for being toxic or something. It is Justin Bieber. Taylor Swift का पहला गाना, which was like It's a love story, No, baby, no, no, no. just say yes. the one that hit the Billboard 100. मैं मारूंगी अगर ये टेलर स्विफ्ट है तो मैं मर जाऊंगी मुझे इससे। And I honestly wanted this question to come to Nipun for just The fun of it. the revenge reasons जो मैं चाहता था। मोमो का तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, पर निपुन मैं तो Taylor Swift थोड़ा सा बोलता, इसको मुझे दूर नहीं रख लेते हैं पता। 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए साथ में One बढ़ा second, okay, let me think. हाँ, टेलर स्विफ्ट की कोई with a fellow music superstar. तूने हैरी स्टाइल्स ही बोला ना? नहीं, हैरी स्टाइल्स तो नहीं, it is not toxic. No. It is Selena Gomez. It is Selena Gomez. कितनी एक्टिंग करता है, ऐसा लग रहा है मैं Selena बिग बॉस के अंदर Gomez. बैठा हूँ। एक अच्छे बैठे कॉन्फिडेंट इंसान को जो टेलर स्विफ्ट की फैन है उसको भी डाउट हो गया। मुझे मजा
ये उसने इस हॉट सीट पे बैठकर आई एम लाइकिंग इट, मुझे बाबर पसंद है। भाई ये बिग बॉस वाली फीलिंग दे रहा है। आया शनिवार का वार, तुम नहीं लगा, तुम इसको बोल दोगे और कोई तुम्हें देख नहीं रहा होगा। गॉड सलिया जाओ क्या अपनी वाली पे। ग्रेट क्रैक, आपके नाम में क्या? मैं टेलर स्विफ्ट ही बोलता। और एक और कौन सी है वो जिसका गाना मुझे पसंद है? शकीरा? सबरीना सबरीना कारपेंटर। दूसरा मैं वो बोल देता। Yeah, so she's not engaged, so That I don't know. Second most मुझे इसका liked- भी नहीं पता था, ये तो मेरा क्रश हुआ करती थी बहुत पहले। इसको पता ही नहीं क्रश की शादी होती हैना है। मोंटाना के टाइम पे। 2024 में इसकी एंगेजमेंट Yeah, हुई this थी। guy is the ये जिसने लिखा ना hey wait that's my wife ये Yes, इससे Benny शादी Blanco। हो गई 2024 में हमारी कब हुई है? वो इसकी 2021 में engagement हुई। हुई। ओ तभी इसका दिल टूट गया ना, मेरी शादी हो गई तो इसने बोला चल कर ही लेते हैं अब क्या रखा, अब क्या इंतजार But करें? highest is the most liked post for an engagement is Yeah. Taylor Swift. Taylor Swift. Okay, my turn, my turn. Oh my Dippo God, won, कितने 30 points? 30 30 points. I So don't you think I come should tell to Momo ये मैच करेगा अपनी 90 plus 30, 120. Momo. चलो चलो करो करो मैच You में are कुछ at सही कर नहीं रहे हो 85. Now I will go for Me. Ting, ting, ting. I'll go for scary capital. Something that is scary. I like horror things. I like horror things I like horror things. I like horror things. I He think likes it- me. It is appealing to me. I like horror things. I like to get afraid. Yeah. So I will go for scenic beauty. ये पता था ऐसा कुछ करेगा. हर बार Scenic beauty for Momo for however many points. Flowing gracefully through the historic heart of a premier European capital city, X is an iconic, deeply romantic commercial and cultural waterway. For centuries, it has served as a central muse for world-famous authors, painters, and musicians, splitting the capital into two distinctly celebrated cultural zones, widely referred to as left and right banks. It is spanned by dozens of architectural marvels, including one of the oldest bridges standing over it, completed in the early 17th century. It eventually empties out into a vast, salty estuary that opens directly into the English Channel. Name X. घंटा कुछ नहीं पता मेरे को इसमें. Take your time. Take your time. Take your time. मुझे लगा You know स्ट्रेट ऑफ this. हार्मुज आने वाला है. मोटरवे क्या नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आने वाला है. पता है. You know this. Okay. You can deduce it. What's the category beauty Scenic Scenic beauty. beauty. Okay. So इसमें कैपिटल निकल गया और तो मतलब कैपिटल में पानी निकलेगा, कुछ और निकलेगा. कैपिटल में कोई लेटर निकलेगा. ओके ओके. और प्रीमियर यूरोपियन कैपिटल सिटी एक्स इज एन आइकॉनिक डीपली रोमांटिक. तो मुझे दो चीजें पानी की चीजें दिख रही हैं. एक तो अपनी लंदन की थेम्स नदी दिख रही है पर वो टी से आती है, और दूसरी मुझे वो वेनिस के वो नहीं होते कैनाल्स, और एम्स्टर्डम के भी कैनाल्स होते हैं. ओके वो दिख रहे हैं. थेम्स तो शायद ऐसे जाती है, तो उसके बैंक्स होंगे तो अपर बैंक या लोअर बैंक होगा मेरे ख्याल से. वो लाइक नॉर्थ साउथ पर थेम्स तो ऐसे जाती है, तो उसका तो लेफ्ट और राइट बैंक है. ओके. एक ओल्ड ब्रिज मुझे पता है यूरोप का, एक मतलब एक तो छोटे छोटे पता है साई ब्रिज वगैरह, पर एक ही पता है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन. गिरा नहीं हो अभी तक. तो इट इवेंचुअली एम्प्टीज इन द वास्ट सॉल्टी ओपन्स डायरेक्टली इनटू इंग्लिश चैनल. इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के अंदर ही है. दैट इज अ गुड हिंट. इंग्लिश चैनल मतलब समथिंग दैट कनेक्ट्स टू इंग्लैंड. तो मैं वेनिस एम्स्टर्डम वगैरह छोड़ सकता हूँ चीजें. ओके देखो देखो मुझे समझ में आ रहा है ना, वही समझ में आ रहा है. मुझे नहीं पता, बहुत गलत हो सकता है, बट आई वुड से आई डोंट नो व्हाट यू वर ट्राइंग मी टू थिंक, बट व्हाट आई थॉट वाज You were trying me to think. I was trying you to think something. something, मेरी जान. so I will go for I will say this is Joker and I will go for Thames. I could be exceptionally No, I wrong. think Joker तो है. Even I think it is Joker, but I think it is Paris. पेरिस नदी का नाम बताना है. नदी का नाम बताना था हाँ, तुमसे. Yes. Flowing gracefully. फिर तो साइन रिवर बहती है तो पेरिस में तो फिर जोकर. I don't know. क्योंकि इंग्लिश चैनल is from France, no? क्या बात कर रहे हो? I think इंग्लिश चैनल फ्रांस से क्यों है यार? नहीं देखो पता है कहाँ से इंग्लिश चैनल. Don't react to everything that has not been there revealed. is Calm down, calm down. in London in Trafalgar Square the guy who's made is the guy who made sure कि इंग्लिश चैनल के थ्रू लोग ना आ जाए. हाँ. ऐसा कुछ था which I think was
Yeah. I think it connects France, UK. My Oh, it connects France to England. एक तरफ इंग्लैंड है, दूसरा फ्रांस. Oh no. नहीं तो you can also be right. No, हो सकता है themes भी उधर बह रही हो. नहीं, Science. मजा आ रहा है इनको आपस में भिड़ते हुए देखने में. मैं आंसर अपना आराम से रिवील कर. और नहीं, I science. don't think he'll. It's a sign Bridge, of. पेरिस में ब्रिज. उस पे भी कोई ब्रिज होगा भाई. हो गई ब्रिज तो कहीं भी उसमें. ब्रिज तो कहीं भी हो सकता है. साइन. Oh no. So how many points, Momo? अब पहले बता दूं. हाँ मतलब बताओ. आंसर ही बता रहा हूँ. Joker, I you think said you are Joker. right. You can And be right. 40 points. So the answer, Momo, is you're absolutely wrong. This is the Seine River and not the Thames River. Nice trick So किया. उसको the trick किया. clue, the two important clues are the English Channel. हाँ. The Thames flows into the North Sea. Okay. The Seine flows into the English Channel, Okay. जो कि estuary हाँ. से जाती है. France and Paris in particular is divided by the Seine into left and right zones. Culturally, you were absolutely spot on. Thames divides it, and most rivers and bigger rivers divided into a north and south zone. Oh. France because it is 12 around these malls है France में, तो बिल्कुल literally divides. Seine बिल्कुल बीच से निकलती है. Left is like more art, culture and everything. Right is more like professional pros and everything. Oh wow. Wow. So that is a very distinctive difference between them. The bridge that we're talking about is Pont Neuf, which is one of the oldest bridges. Pont, Pont is bridge, Neuf is 9. But I don't think it beats the. It means something nothing bridge. We can Google it later. But Wow. so it's Pont Neuf. It's not. I think तुम जो भी London में सोच रहे थे. It's not. It's one of the earliest completed bridge in the 17th century. Wow. So the Joker is still out there. Oh no! Just want to tell you guys. अच्छा जोकर नहीं हुआ ना. No. Oh, ये जोकर नहीं Really हुआ. not Thames Oh, because I yes. thought Joker is also. तो you knew मैं क्या करूँगा. Yes. भाई. Yes. तो दोनों क्वेश्चन साथ साथ खेले जाएंगे. Or hidden. एंड ब्लाइंड रहेगा. तो जब तू खेलेगा I'll go away somewhere. Yeah. Yes. I think that was a good Suggestion by somebody. by somebody in the comment. वो इधर कि- लगाते comment. Yes. Thank you. So there is soulful fall and scary capital left. मजा आएगी. मैं सोचा नहीं था मेरा. Let me also not see वो क्या कैपिटल क्या वो कैटेगरी पिक करती है. But how does that matter? बाद में क्या मैं गेस करूंगा ना. अच्छा. क्या किया होगा. ठीक है, जा. ठीक है. तो मोमो इज लीविंग. पहले आप लगा लो सब नॉइज कैंसलिंग, कमरे में चले जाओ एंड होपफुली आपको पसंद आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट. Okay. So, Nipun is going with Scary Capital. Coined by experts following a high-profile international hostage crisis, X is a popularized psychological concept named after a major capital city. The term originated from a 1996 hostage crisis where the captors grew empathetic to their victims, repeatedly allowing them to communicate with families, providing them with games and medical care, and eventually releasing most of them. More famously, Beauty and the Beast is widely considered a narrative example of X. What are we talking about? Listen. Hostage and X and capital is giving me Stockholm. But Stockholm में तो जो victim है उसको प्यार हो जाता है ना capital से, ना? Capital को थोड़ी प्यार हो जाता है victim से. पर मुझे कोई और सिंड्रोम तो पता भी नहीं है. मुझे कोई और सिंड्रोम का नाम ही नहीं पता ना. मुझे तो पता ही नहीं. Ignorance is bliss. This is ignorance. मुझे बता रही है तू लिखेगी. लिख देती हो भैया आपकी सब बोले. ये लो आप तो देख लो. ठीक है, तो she has written Stockholm syndrome. मामा. Okay, so Nipun has chosen and played. हाँ बताओ. Now, if Momo wants to guess, पहले guess what you want to go with. What do you want to go with? If I were to go with something, I would have picked Scary Capital. Are you going to go with Scary Capital? Can I go with Scary Do you Capital? want to go with? उस पे हम सोचेंगे. But I want to go, but can You I? cannot go with Scary Capital. You I cannot. was just confident in the geography after science, so I thought चलो. अच्छा, okay. So the only option left, my friends, is Soulful Fall. The X maple, Acer pseudoplantanus, gets its name from its physical resemblance to the true X, plane tree. People in Europe historically called it a X because of its large, lobed leaves and peeling bark, while the maple part accurately identifies it as a member of the maple Acer genus.
The word X originally stems from an ancient Greek word sucomorus, meaning fig mulberry. X trees produce massive, broad leaves that turn beautiful, muted shades of yellow and brown during the fall. Because they are notably large and dry out quickly, these leaves are a classic staple of the autumn season. Identify X. Slowly, take your time. I know the photos. मैंने फॉल की फोटो सर्च करते हैं तो वो ब्यूटीफुल ऑरेंज रेड ब्राउन करके आते हैं. विंडोज वॉलपेपर. हाँ. Gets its name from physical resemblance to the true X. Plane tree, plane. Call it X because of its large lobed leaves and peeling bark, while the maple part accurately identified as a member of the maple genus. Sucomorus. Okay. Meaning fig mulberry. Fig. Fig is अंजीर. मुझे पेड़ क्या क्या पता है? Sakura, शीशम, सहतूत. I don't know. I cannot think of any S-related words or not S-related words. So I'll just do what I can do right now with my limited mind. I will say this is the Joker. And do you have an answer for it? I don't have an answer for it. Since Nipun has seen your question, it's only fair that you get to see Nipun's question as well. Okay. Yeah. So, right, scary capital. Coined by experts following a high-profile internet hostage crisis, X is a popular psychological concept. Stockholm syndrome. The term originated from 1980 hostage crisis where captors grew empathetic to the victim, repeatedly allowing them to communicate with families, providing them more valuable. Beauty and the Beast is widely considered a narrative of Stockholm syndrome. This is Stockholm syndrome. निपुण ने क्या बोला था इसमें? Do you want to show your answer, Nipun? या मतलब मेरे पॉइंट्स भी लिखे नहीं इसके नहीं साथ. so हाँ तो I'll बोल hide दे that. points मत बोल हाँ I'll hide वैसे that. बोल दे. बस Yeah, बोल written देना. Stockholm. Stockholm Written syndrome. Stockholm. So both of them answered Stockholm syndrome. It's a very easy crack. Let us go with Soulful Fall. Okay. Okay. Oh my god. Because both of you are in the right direction. So yes, this is completely not a joker. It's Sycamore. sycamore trees. ये I'm sure पत्ता देखा all of था. you must have heard the name also. So sycamore तीन तरीके के trees होते हैं. Sycamore maple trees सबसे widely known है यूरोप में. हाँ. सिकमोर नॉर्मल ट्रीज नोन है एशिया में बहुत ज्यादा, बट उनके जो थोड़े से ग्रीनिश लीव्स होते हैं पतले से, बट दीज काइंड ऑफ लीव्स आर मोस्टली नोन एज मेपल लीव्स, Which means that Joker. I'm sorry. Which means both of us are wrong. which means I don't know if it has happened ever. The last No. question. Joker has survived. Let's go through what happens in Beauty and the Beast. The beast captures the beauty, हाँ. and the beast falls in love with the beauty. Not the other way around. This is Lima, not Stockholm syndrome. Now, what capital is Lima of? Lima. Peru. Lima. Peru. Peru. Yes. There is a London syndrome. I did not keep it because it really is very very different. So in London syndrome, hostages को बहुत ही aggressive feelings होने लग जाती है अपने captors. Stockholm syndrome was born by a 1973 bank robbery in Stockholm, where victims later defended their abusers. Right, right. But Lima syndrome was born after a 1996 Japanese embassy hostage crisis in Lima, Peru, where militants unexpectedly released many hostages before they bonded with them. Wow. Nice. This Wow, भाई is a आपने- joker. एक फेक जोकर डाला था, एक रियल जोकर डाला था, एक गूगली जोकर डाला था. क्या क्या Okay. क्या क्या किया था? It's time for points now. कितने points इन दोनों ने लगाए थे? I put 30 points. I went was all out. All out. But But there I is still have chance. a very very big chance Big chance, he to said. incredibly, superlatively increase your points. Okay. We are going to play आ जाए. आ जाए. नहीं है. stakes and ladders, दोस्तों. Oh, ऐसे stakes and ladders. मैं क्या stake करूँगा? The general category is. General category. Any guesses? Any guesses? People love it. Nostalgia.
category is nostalgia. किसका भाई किसका? Oh, आपका दोनों नॉस्टैल्जिया का। तो मेरा तो 3 साल पुराना है। मेरा तो मैं तो पैदा ही कल हुई हूँ यार। ये मेरे से 6 महीने पड़ी है. And there are 2 subcategories which I'm going to reveal here as well. Shows and songs/music. This show first aired on ZTV in the year 2006. रॉयल मुगल्स, रॉयल। 14 अकबर 14 अकबर। This multi-person musical team became a household name in the 2000s. रुको आशा जी कैसे गाती थी? सलाम नमस्ते। Okay, let me give you a hint. I lose 45, she loses 100. मुझे लगता है शिवांका क्वीन. अरे यार सूफी यार, मैं नहीं आता यार सूफी यार। Nippon fell in the trap. Thank you very much. That's in my time. You've been a lovely audience. Boom. दोस्तों मैं जब भी आया हूँ ना members only में, पासा पलटा ही है. This is my most favorite alpha beta. But Nippon wins this game. Nippon. Oh, well played. I think both of you played well. दोस्तों भूल चूक माफ. This was my first time making questions, hosting quiz. तो Good job. जिस ठहराव और तमीज के साथ I know. आप होस्ट कर रहे हो, I know. आप खेलते वक्त उसका पूरा ही विपरीत होते हो। अभी अगर आप लीमा हो तो तब आप स्टॉकहोम होते हो। दोस्तों अलग अलग वो बनाना पड़ता है. बनाना पड़ता है अलग अलग। Two different. सब कुछ खेल है. तुम रियल में सब मिलो. खेल है, सब स्टोरी है ये। Okay. आपको बताता हूँ स्टोरी टाइम। The Three Princes of Serendip। अपनी टेबल के नीचे देखो, मिलेगा आपको सोलमेट। बाय बाय दोस्तों. He's थैंक यू so different दोस्तों. when he's a player, seriously. So सेम मस्सो के different. साथ भी ऐसा ही हुआ था। मस्सो while playing was very And here she was like, हाँ, और उसके बाद अब है अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर। My God, how Masso becomes Amitabh Bachchan and Shivi becomes Salman भाई? We have no idea। अच्छा उनकी अपनी पे. आ जा पता नहीं चलती है आजा निप्पू चल, निप्पू आजा। I'm not talking about the soulmate in the questions. टेबल के ऊपर सोलमेट है हमारा। It's already there. टेबल under में the राखी table. सावंत थी। Look under your tables. Oh my God. There's something। चलो, let's start. Show it to the camera. Lights up, lights up. What did you do? There's something। Oh my God।